Assalamu alaikum. This is Karim Shirazi, और today we are going to discuss the third lecture of IELTS listening. और अब देखें, ये है listening sample task matching 2. इससे पहले हमने किया था matching 1. मैचिंग 1 और 2 में फ़र्क ये था कि मैचिंग 1 में जो है आपके ऑप्शन जो है वो एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. उसमें लिखा हुआ भी होता है इंस्ट्रक्शन में, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन 1. अच्छा, अब ये मैचिंग हेडिंग 2 वाला जो है, इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें जैसे ये फॉर एग्जांपल होटल के नाम लिखे हुए हैं 5, ठीक है. द ब्रिज होटल, कार्ल्टन हाउस, द इम्पेरियल, द मैजेस्टिक, द रॉयल ओक. अच्छा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट आंसर A&E नेक्स्ट टू द क्वेश्चन. यानी कि जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे फोकस करना है. जैसे रूरल एरिया, ओनली ओपन रिसेंटली, ऑफर फैसिलिटीज़ फॉर बिजनेस फंक्शन एंड हैज़ एन इंडोर स्विमिंग पूल. रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आपने इनको देखना है, ठीक है. और आप जब रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो वो रूरल एरिया की जब भी बात करेगा, जैसे रूरल एरिया की बात करेगा, आपने देखना है उसकी कनेक्टिविटी कौन से होटल के साथ है, उसका नंबर यहाँ आ जाएगा, सिंपल, ठीक है. अभी हम इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं. Hear a man talking to an official at a tourist information office. Can I help you? Yes, I was wanting somewhere to stay for a few days, a 4 or 5-star hotel. Can you tell me something about the possibilities? Okay, right, well, there are 5 hotels that might interest you. Were you wanting a city centre location, or would you be interested in something a bit further out? Well, I do have a car, so I could go for either. Well, there are 2 central hotels in the range you're looking for. There's Carlton House and the Imperial. They're both near the main square, but if you've got your own transport, you might be interested in the Royal Oak. That's out in the country, about 10 kilometres away. Very peaceful. Then there's the Bridge Hotel and the Majestic. They're both in town, but not in the centre. They're out on the airport road. That might be a bit far out, actually. Okay, now the other 2 you mentioned in the city centre. Can you tell me a bit about them? Well, they're both excellent hotels. If you want something with a bit of character, Carlton House is quite unusual. It's a very old building that was originally a large private house. It was bought by the Vannies chain, and they completely refurbished it. They took their first guests just a few months ago, but it's already got an excellent reputation. That's a 5-star hotel. Or there's the Imperial, which is a much more modern building. That also has its own gym, and it also has internet connection and meeting rooms. It's used for conferences and corporate events as well as private guests. That's 5-star as well. Does it have a swimming pool as well as a gym? No, the Royal Oak has an outdoor pool, which is lovely in the summer, but the only hotel with an indoor pool is the Bridge Hotel. It doesn't have a gym, though. The Majestic is planning to build a swimming pool and a fitness centre, but it's not finished yet. I see. Well, I think I'll probably... ठीक है, अब आपने देखा कि इसने जो है सीक्वेंस में डिस्कस किया, पहले रूरल एरिया के बारे में, फिर रिसेंटली रेनोवेशन और ओपन रिसेंटली के बारे में, फिर ऑल फैसिलिटीज़ बिजनेस फंक्शंस के हवाले से, और फिर इंडोर स्विमिंग पूल के हवाले से. ठीक है, अब हम इसके आंसर चेक करते हैं. ये देखें, नंबर 1 रूरल एरिया वाला कौन सा है, ई का मतलब ये है द रॉयल ओक, ठीक है. और सेकंड वाले का जो रिसेंटली ओपन हुआ है उसका नंबर है बी, द कार्ल्टन हाउस, ठीक है. और फिर तीसरे नंबर पे जो ऑफर करता है फैसिलिटीज़ फॉर बिजनेस फंक्शन, दैट इज सी इन द इम्पेरियल होटल. एंड फॉर उसमें लास्ट में डिस्कस किया था स्विमिंग पूल के हवाले से, तो उसके लिए द ब्रिज होटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर द स्विमिंग पूल एंड ऑल. ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपके. अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है टास्क या प्लान या मैप, लिसनिंग सैम्पल टास्क फॉर प्लान, मैप, या कोई लेवल बनाओ या कोई डायग्राम बनी हुई हो. अब इसमें देखें, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जहाँ अब ये टाउन लाइब्रेरी की बात हो रही है और ये सारा लिखा हुआ है कि आर्ट कलेक्शन, चिल्ड्रंस बुक, कंप्यूटर्स, लोकल हिस्ट्री कलेक्शन, मीटिंग रूम. अच्छा, अब आपने फोकस करना है कि जहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे आपने आंसर लिखना है, जैसे 14, 13, 15, 11, 12. अच्छा, अब इसमें नॉर्मली मिस्टेक क्या होती है कि जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो ऑफकोर्स वो स्टार्ट होगी इंट्रेंस से, तो आपने इंट्रेंस से देखना है
कि ये कहाँ गया, उसके बाद लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है। तो नॉर्मली ये यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड। अगर आपकी प्रेपोजिशन अच्छी हैं तो आप इसको सही पिक कर सकते हैं, और सीक्वेंस मिस मत करिएगा। एक सीक्वेंस मिस करेंगे तो वो घुमा देता है। दूसरी चीज़, प्रेपोजिशन में मसला क्या आता है, जैसे वो अगर यहाँ खड़ा हुआ है इस जगह पर, तो इस जगह पर खड़ा हुआ है, तो अब कन्फ्यूजन ये होती है कि फ्रंट वाला ये होगा, बिसाइड वाला कौन सा होगा। तो वो हम इसमें मिस कर जाते हैं, एक सवाल मिस होगा तो फिर आगे वाले एक दो सवाल और गलत हो जाते हैं। तो अभी हम इसकी पहले रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, उसके बाद फिर आप देखिएगा इसको फोकस करके कि यहाँ से देखना है अपने 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह सारा सीक्वेंस के अंदर। लेट्स सी। Hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. My name is Anne, and I'm the chief librarian here. And you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised and what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room also has a photocopier, in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on, you'll come into a large room, and this is the main library area. There is fiction in the shelves on the left, and non-fiction materials on your right, and on the shelves on the far wall, there is an excellent collection of books relating to local history. We're hoping to add a section on local tourist attractions too, later in the year. Through the far door in the library, just past the fiction shelves, is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks. And next door to that is the children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under 11s. Then there's a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. It was originally the art collection, but that's been moved to another building. That's about... ठीक है, अब आपने देखें रिकॉर्डिंग सुनी। मैं इस कर्सर मूव कर रहा था, पहले उसने कहा कि फ्रंट पे जाएंगे तो लेफ़्ट पे जो है वो आपके आएगी रेफरेंस बुक्स, फिर उसके सामने ये है, फिर लाइब्रेरी एरिया है, उसमें एक साइड पे फिक्शन है, एक साइड पे नॉन फिक्शन है। तो वो साल आप फॉलो करते हैं सीक्वेंस में क्या, पहले 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, फिर 14 आया, फिर लास्ट में 15 आया। ठीक है, अब हम इसके आंसर चेक करते हैं कि ये देखें, नंबर 11 का आंसर है एच मीन रेफरेंस बुक्स, और फिर नंबर 12 का है जी यानी पीरियोडिकल्स, और फिर 13 डी यानी कि लोकल हिस्ट्री कलेक्शन, फिक्शन और नॉन फिक्शन की, फिर 14 में था बी यानी कि चिल्ड्रंस बुक, और 15 में था एफ का मतलब है ये मल्टीमीडिया। ठीक है, तो आपने बिल्कुल फॉलो करना है सीक्वेंस को प्रीपोजिशन के साथ और सारे आंसर लिखते जाने, तो यू विल बी हैविंग द राइट आंसर। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अच्छा, अब ये कहलाता है जो लास्ट टाइप है नोट कंप्लीशन की। अब नोट कंप्लीशन में देखें, ये लिखा हुआ है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर। अब ये देखें, ये नंबर लिखे हुए 11, 12, 13, 14, 15, 16, और जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो आपने ये इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखनी है कि 3 वर्ड से ज़्यादा का आपका आंसर नहीं होना चाहिए या नंबर नहीं होने चाहिए। तो ये लेफ्ट साइड वाली हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, और जो राइट साइड पे वर्ड लिखे हैं वो भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। वो आपके कीवर्ड हैं कि वेल नोन फॉर व्हाट, वो आपने यहाँ पे लिखना है। अभी हम इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं, और इसी के बाद एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, ये ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम इसका रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं।
You will hear a radio broadcast called Focus on the Arts. First, you have some time to look at questions 11 to 16 on page 4. Listen carefully and answer questions 11 to 16. And welcome to Focus on the Arts. I'm your host, Dave Green, and this is your very own local radio programme. Every Friday evening, we put the spotlight on different arts and culture facilities and look at the shows and events that are on offer in the coming week. And today, the focus is on the National Arts Centre. Now, if you don't already know it yourself, I'm sure you've all heard of it. It's famous throughout the world as one of the major venues for classical music. But did you know that it's actually much more than just a place to hear concerts? The centre itself is a huge complex that caters for a great range of arts. Under a single roof, it houses concert rooms, theatres, cinemas, art galleries, and a wonderful public library, as well as service facilities including 3 restaurants and a bookshop. So, at any one time, the choice of entertainment there is simply enormous. So, how did they manage to build such a big arts complex right in the heart of the city? Well, the area was completely destroyed by bombs during the war in 1940. So the opportunity was taken to create a cultural centre that would be what they called the city's gift to the nation. Of course, it took a while for such a big project to get started, but it was planned in the 60s, built in the 70s, and eventually opened to the public in 1983. Ever since then, it has proved to be a great success. It's not privately owned, like many arts centres, but is still in public hands. It's run by the City Council. Both our National Symphony Orchestra and National Theatre Company were involved in the planning of the project, and they're now based there, giving regular performances every week. And as the centre is open 363 days of the year, there are plenty of performances to choose from. ठीक है, अब आपने ये देखा कि इसमें ये इन्होंने जब रिकॉर्डिंग शुरू करी तो यहाँ पे कीवर्ड क्या था, वेल नोन फॉर. तो नेशनल आर्ट्स सेंटर में वेल नोन फॉर व्हाट था वो यहाँ पे वर्ड आएगा. फिर उसने बताया कि इसके अंडर अम्ब्रेला ये सारी चीज़ें होती हैं आर्ट्स की, थिएटर, सिनेमाज, आर्ट गैलरीज, पब्लिक लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट्स. अब उसके बाद एक चीज़ और बोली थी वो यहाँ पे आएगी. फिर ये फॉर का जिक्र किया था. वॉर के जिक्र के बाद ये कब 1960 के बाद जो वर्ड आएगा वो इधर आना था. फिर यहाँ पर आना था कि नंबर 14 में ओपन टू पब्लिक, यानी कि कौन से ईयर में ये खोला था तो ईयर आएगा यहाँ पे. फिर मैनेज्ड बाय, यानी कौन सा इदारा था जिसके तरीके से ये इसको मैनेज किया गया था, और ये पर ईयर में कितने दिन इसमें प्रोग्राम होता था. ठीक है, अब हम इसके आंसर चेक करते हैं. क्लासिकल म्यूज़िक, फिर रेस्टोरेंट्स के बाद बुक शॉप, फिर इट सेंटर वॉज प्लान. फिर 1983 दी सिटी काउंसिल वो इदारा था जो मैनेज करता था, और 363 डेज पर ईयर ये चलता था. ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 है. दिस इज नोट कंप्लीशन है ये भी. अब इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर. अब इसमें सिंपल ये होता है कि देखें ये सीक्वेंस चली ना, उसी सीक्वेंस में जाएगा. पहले वो बताएगा मंडे एंड ट्यूसडे में टाइम बताएगा, इवेंट बताएगा, फिर वेन्यू जो होगा वो आपने लिखना है क्योंकि यहाँ नंबर लिखा हुआ है. टिकट प्राइस आपने नहीं लिखनी है यहाँ पे. सेकंड वाले में टिकट प्राइस लिखनी है और क्या लिखना है, इवेंट का नाम लिखना है. थर्ड वाले में क्या लिखना है, इवेंट का नाम लिखना है और बस, ना इसमें वेन्यू लिखना है ना आपने टिकट प्राइस लिखनी क्योंकि वो ऑलरेडी लिखी हुई है. ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं. You hear the rest of the broadcast. You have some time to look at questions 17 to 20 on page 5. Listen and answer questions 17 to 20. To give you some idea of what's on, and to help you choose from the many possibilities, we've made a selection of the star attractions. If you're interested in classical music, then we recommend you go along to the National on either Monday or Tuesday evening at 7:30
for a spectacular production of the Magic Flute, probably the most popular of all Mozart's operas. It's in the Garden Hall, and tickets start at only £8, but you'll have to be early if you want to get them that cheap. And remember, it's only on for those 2 evenings. For those more interested in the cinema, you might like to see the new Canadian film, which is showing on Wednesday evening at 8 p.m. in Cinema 2, and that's called 3 Lives. It's had fantastic reviews, and tickets cost just £4.50, which is a reduction on the usual price of £5.50. So, it's really good value, especially for such a great movie. But you can see the centre's main attraction at the weekend, because on Saturday and Sunday, 11 a.m. to 10 p.m, they're showing a wonderful new exhibition that hasn't been seen anywhere else in Europe yet. It's a collection of Chinese art called Faces of China. That's in Gallery 1, and it has some really fascinating paintings and sculptures by leading artists from all over China. And the good news is that it's completely free, so don't miss it. So why not go along to the National Arts Centre next week for one or all of these great events? And you can always pick up a programme and check out all the other performances and exhibitions on offer, or coming soon, on almost every day of the year. Next week, we'll be looking... ठीक है, अब आपने देखा रिकॉर्डिंग. अब इसमें देखें, आपने उसने पहले सीक्वेंस में बताया मंडे एंड ट्यूसडे को 7:30 PM पे प्रोग्राम स्टार्ट है. देन आफ्टर इवेंट का बताया थी मैजिक फ्लूट, फिर उसने वेन्यू बताया इसका, फिर टिकट प्राइस बताया. सिमिलरली फिर वेडनेसडे की डिटेल इसी तरह सीक्वेंस में बताई. तो आपने सिर्फ ये लिखना था कि इवेंट का नाम क्या था और उसके टिकट प्राइस कितने थे. और सैटरडे संडे जो वीकेंड को उसने जिक्र किया, तो उसमें एट दी एंड आपने सिर्फ ये बताना था कि उसका इवेंट का जो नाम है, जो भी वर्ड है, वो आपने यहाँ लिखना है. अब हम इसको चेक करते हैं. ये देखें, दी गार्डन हॉल वेन्यू था पहले वाले का, वेडनेसडे वाले का 3 Lives कैनेडियन फ्लेम एट प्राइस $4.50, जो कि उसने बताया था कि रिड्यूस हुई थी. पहले ये $5.50 थी. लेकिन सबसे अच्छा उसने बताया कि सैटरडे संडे वाला है वीकेंड का. क्यों? क्योंकि ये फ्री होता है. क्या होता है? तो ये अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है लोगों के लिए. और ये इसका इवेंट का नाम है फेसेस ऑफ चाइना, और इसके टाइमिंग होते हैं 11 PM to 10 PM. ठीक है. तो मैंने आपको डिटेल में जो है जितनी भी लिसनिंग क्वेश्चंस की टाइप्स हैं वो सारी बताई हैं एक एक करके, विद एग्जाम्प्लिफिकेशन, विद एक्सप्लेनेशन. इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे डिटेल में इसकी साथ साथ, ताकि आपको मज़ीद प्रैक्टिस की जो है वो मटेरियल होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे. और अगर ये जो हमने एक्सप्लेन किया है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको रिवर्स करके 2 बार 3 बार सुन सकते हैं दोबारा, तो मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी आपको. ठीक है. थैंक यू सो मच.